Hello friends, this is Nisha. Welcome back to my channel Single Solution to Our Problem. And today's topic is how to become a teacher with the QMath. That is the online teacher. We all know that it is the time of a pandemic, that is the coronavirus, and everything is going on online these days. QMath has also updated his policies. He has also changed. Now it is become online. I have explained everything about the QMath, Whitehead Junior, and Vedantu how to become a teacher with this online platform in my previous video, which is visible here. So if you have not watched this video, just give it a check. Earlier QMath was the offline platform. In this video I explained that QMath is a offline platform, and after that I just start getting the messages that QMath is online now. So QMath has changed, and please update your video. This you are explaining very old thing. It is online now, and please update this information, and please explain about the online version of the QMath. So this video is about the online version of the QMath. Now how the QMath has changed, and now how can you become a online teacher with the QMath. So let's start. First you need to sign up on this site, that is the qmath.com. After that you get a message from the QMath that you are interested to become a QMath teacher, and you just go and apply on this link. When you click on that link, it is a link of a Google form, and there are means it is a complete Google form, and there are some lines, a few lines ओवर दी गूगल फॉर्म में. सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ लाइन्स होंगी जो डिटेल होगी फॉर्म की, वो होगी. आई विल शो यू ऑल दी डिटेल्स हेयर बिकॉज आई हैव द मैसेज एंड आई विल शो यू हेयर. So the last line of those 4-5 lines that pay 9,999 means 10,000 9,099 rupees पे कीजिए and become a QMath teacher. आपको 10,000 रुपये पे करने हैं एंड आफ्टर दैट बिकम अ QMath टीचर. मीन्स उसमें लिखा होता है इफ़ यू आर रेडी टू पे ₹9,999 अगर आप इतने पैसे पे करने के लिए तैयार हैं देन बिकम अ QMath टीचर. आप QMath टीचर बन जाइए और ये फॉर्म फिल करके हमें सबमिट कर दीजिए. एंड दिस फॉर्म है जस्ट हैव दी नॉर्मल डिटेल्स, योर नेम, योर एड्रेस, योर फ़ोन नंबर, योर क्वालिफिकेशंस and all these things, and you just need to submit this form. So when you submit this form, after 2 or 3 days you will get a call from the QMath. Mostly they call from the Bangalore because they have their office in the Bangalore. So you get a call from QMath, and this is the time you can ask your all the queries, any queries you have related, because you are going to start a job, you are going to spend a money. Of course आपने एक decision लिया कि I am ready to pay the 10,000. So of course you will have some queries in your mind. So just it is the time you can ask your each and every queries. So after when your all queries are clear, so he will ask you, are you ready to do? Then he will give you an offer. Yes, it is the right time for you to do the job with QMath because there is a offer is going on of 50%. Earlier you need to pay ₹9,999, but now you need to only pay 4,999. मीन्स आपको सिर्फ 5,000 रुपये ही पे करने हैं. 50% का ऑफर चल रहा है. सो इट इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. सो दे विल ट्राई टू परस्यू you in this way. So finally, if you are ready to go with the QMath, so after that after interaction with that person, and if you say yes, I am ready to go, he will help you to start your journey, or you can also start. Means you just need to register yourself with your registered number again, and then you will get the OTP on your number, and first you need to make the payment. सबसे पहले आपको पेमेंट ही करनी ही है, उसके बिना कुछ भी स्टार्ट नहीं होएगा. फर्स्ट यू गेट द कॉल फ्रॉम अ QMath from the QMath, and he will explain you everything कि आपको दोबारा से qmath.com पे जाके अपने रजिस्टर नंबर के साथ दोबारा से रजिस्टर करना है, एंड देन यू विल गेट अ OTP ऑन योर दैट नंबर. आपको OTP आएगा और आपको उस OTP को यूज़ करके पेमेंट करनी है. जो 5,000 की पेमेंट करनी है या 10,000 की जो भी पेमेंट करनी है, आपको उस OTP को यूज़ करके करनी है.
एंड जब आपकी पेमेंट, जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी, आफ्टर दैट यू नीड टू सबमिट अ वीडियो ऑफ 2 minutes, इंट्रोडक्शन वीडियो दैट विल बी डेडिकेटेड टू द मैनेजर। वो वीडियो डेडिकेटेड होगी मैनेजर, आपको मैनेजर के लिए 2 minutes की वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो बनानी है। जस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपने बारे में बताना है, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को एक्सप्लेन करना है, आपको वो वीडियो उनको सेंड करनी है। आफ्टर दैट, after submission of this 2 minute video, there will be a test of English and Maths. This test have the 2 modules. The first module is KG to 5th class, KG starting from the class KG and up to 5th class. And the second module is KG to 8th. First you need to clear this KG to 5th module. फर्स्ट टेस्ट इज ऑफ KG to 5th मॉड्यूल, आपको इस टेस्ट को क्लियर करना है। एंड इफ़ यू क्लियर दिस टेस्ट देन दे विल डिस्पैच योर डिजिटल टैबलेट, जो QMAT टैबलेट है, दे विल डिस्पैच यू टू यू, वो आपको वो टैबलेट डिलीवर कर देंगे। एंड आफ्टर दैट यू नीड टू clear this test KG to 8th. If you clear this test also, then you will eligible for a further another test, that is the Western English test. This test is not compulsory, Western English test. It is totally your wish, you want to give this test or not want to give this test, because it is a test for the, if you want to take the batches of the international students. So first you need to clear this test, and of course you should go with the batches of international students, because there you get the higher payment. The payment of their batches is more. So first, but if you want to take the batches of the international students, you have to clear this test, that is the Western English test. Next is the pattern of teaching. The pattern of teaching is the batch wise. You will be allotted with batches, and you need to teach the students in the batches, and you get the payment according to the batches, how many number of batches you are teaching in a day. So in a batch there will be only 6 students, there will be 6 students in a batch, and per batch you will get rupees 7,000 payment. So this is the payment for the normal batches, you will get 7,000 rupees for the सिंगल बैच. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप एक दिन में कितने बैचेस ले सकते हैं. अब 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच, 4 बैच, 5 बैच, 6 बैच और 8 बैच, कितने बैचेस आप एक दिन में ले सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू. उसके अकॉर्डिंग ही आपकी पेमेंट्स ऐड ऑन होती चली जाएंगी. जैसे अगर आप एक बैच ही ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 7,000 पेमेंट हो गया. अगर आप 2 बैचेस ले पा रहे हैं दिन में तो आपको 14,000 पेमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी. प्लस अगर 3 बैचेस ले पा रहे हैं तो आप अराउंड 22,000 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं पर मंथ. सो आई थिंक इट इज़ नॉट सो बैड थिंग. And what about the international student batches? Yes, this 7,000 rupees payment is for the batches of Indian students. But if you are taking the batches of international students, then in that case you will get the payment rupees 15,000 per month. Then you will get the 15,000 rupees per batch per month. एक बैच के आपको 15,000 रुपये मिलेंगे एक महीने में, नॉट पर डे, per month. It is the per month payment, means 7,000 is per month for 1 batch and 15,000 is per month for 1 batch. So this is their payment method. Next is the teaching time. Teaching time is there is 7 days in a week. So in 7 days you need to take the 2 live classes. There will be 2 live classes in a week. Next, the remaining day you need to take daily the class of 1 or maximum 2 hours. Minimum 1 hour, the class will be minimum 1 hour and maximum 2 hours. Means if the class is stretching, so maximum it will be stretched to only 2 hours. So daily you need to take 1 or 2 hour classes, and there will be only 2 live classes in a week. In a week there will be 2 live classes. And after that you also need to take some demo classes to influence the student, to make the student to influence the students to
persuade the student to attend the QMath classes, take the QMath classes. So you need to influence the student. For that you need to take the demo classes, and it totally depends on your comfort. You want to take the demo classes or not want to take the demo classes. But those students who will be influenced by your demo classes, those students will be included in your batches. मीन्स आपने डेमो क्लासेस दे दे के 6 बच्चों को इन्फ्लुएंस कर लिया है, तो वो 6 बच्चों का बैच आपको अलॉट हो जाएगा, वो आपका बैच है. So this is the demo classes, and there is no extra payment for the demo classes. Demo classes is just your advertisement. Advertisement will be done by the mutual efforts, means both side will be try to influence the student. You also make your efforts to make the student in, and they will also help you, they will also advertise you to get these students. So this is the means advertisement will be just mutually cooperated, means you also need make efforts and they will also push you to get the students in. वो आपको एडवर्टाइज करेंगे, और आपको क्यों मैथ को एडवर्टाइज करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी सोसाइटी में, अपनी ऑनलाइन जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, आपको सब जगह क्यों मैथ को शेयर करना है कि मैं ये कर रही हूँ, प्लीज़ ये क्लासेस ले लीजिए, बहुत अच्छी हैं. नेक्स्ट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल द क्यू मैथ टीचर. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. आई नीड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है. दिस इज़ माई क्वेरी. Like means when you are selected as a QMath teacher, so you will get the batches or you need to make your batches. means आपको बैच अलॉट हो जाएगा कि ओके आप QMath टीचर की तरह सेलेक्ट हो गए हैं, तो आपको बैच अलॉट हो गया है और आपको इन बच्चों को पढ़ाना है, और आपको पहले डेमो क्लासेस दे के अपने बच्चे को इन करना है. मीन्स अपना बैच खुद ही बनाना है और उसके बाद उनको टीच करना है. व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आई एम टोटली कंफ्यूज अबाउट दिस क्वेश्चन एंड आई डोंट हैव द आंसर. सो इट इज़ माई क्वेश्चंस टू ऑल द QMath टीचर. Please answer in the comment section, and I hope my information you all will like. It is totally authentic information. There is no sponsorship and there is no advertisement. So I hope you will all like this. So subscribe the channel, like the video, and thank you so much. Bye bye.